and also that there is an again another closing remark. Zishan, just give a nod so that Talia can start. Yes, miss, you can start the session. Okay, Everything is perfect. okay. Talia, go Okay. ahead. Assalamu alaikum and very warm welcome to everyone joining us today. My name is Talia Farouk. I'm Senior Audit and Advisor Associate, and today I have this absolute honor of hosting this much needed awareness session on workplace harassment. On behalf of CA Women Committee of ICAP, in collaboration with Federal Ombudsman Secretariat for Protection Against Harassment. Everyone will agree when I say that workplace harassment is not rare. What's rare is the room where we talk about it, and today we are in that room. So, first of all, I would like to thank ICAP for giving us this platform. I want you all to know that all the participants can write their queries in Q&A session that will be hosted at the end of all the session. So let's now begin officially in the name of Allah, Al-Muhaiminu, the preserver of safety and the overseeing protector. So we will start now the session with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah. Everyone, every person in this profession has the right to walk into their workplace without any fear, and this is not a privilege, it's their right. And for our welcome address today, we have with us someone who taught us how to actually claim it. I will be very honest. Introducing Miss Amara Shamim FCA is both an honor and a challenge because how do you compress a legacy in just 2 minutes? She is the first female council member from the North in the ICAP's history, not merely elected, but elected with the highest number of votes. She serves as an independent director at Park Qatar General Takaful, and she is CFO of Reamrise. For countless CA professionals, including myself, Miss Amara is not just an inspiration, she is the evidence. Evidence that when a woman is given a seat, she just does not just sit, she shifts the entire table. So without any further delay, I request Miss Amara to please kindly join us and deliver the welcome address. Over to you, Miss Amara. Thank you so much, Talia. Please let me know, am I audible? Yes, yes. Thank you so much, Talia. And Assalamu alaikum, everyone, our distinguished guests, respected council members, my dear colleagues, and aspiring professionals. It is my absolute honor to welcome you all to this very crucial awareness session on the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act, organized in proud collaboration with FOSPA. And we are deeply privileged to have with us today our keynote speaker, Ms. Fawzia Vikar, the Honorable Federal Ombudsman Person Against Harassment. Ms. Vikar is an internationally recognized champion for human rights, legal reform, and workplace safety in Pakistan. Thank you so much, Ms. Fawzia, for joining us. Your presence here today reaffirms our shared institutional commitment
to turn our professional spaces into environments where dignity is non-negotiable and safety is guaranteed. Well, I would like to say that true economic prosperity and social progress cannot be built on half a foundation. Today we gather here not merely to discuss a piece of legislation, but to confront a structural bottleneck that actively limits our nation's potential. An inclusive work culture is not an alternative option or an act of charity. It is an absolute economic necessity today. If we want to see Pakistan thrive, we must fundamentally rewrite our corporate landscape to create an intentional, safe, and conducive spaces for women to lead, innovate, and excel. Well, to understand the urgency of this session, we must analyze economic realities of Pakistan. And I would like to talk about a few numbers. When we look at Pakistan's population, this is 49% that comprises of women. And out of that 49% and our total workplace or the women working working women are only 24.4%. So that means that out of every 4 adult women, 3 adult women are not working. So what does that mean? That means that half a population of Pakistan is financially carrying the other half of Pakistan. So which is a very massive dependency ratio, and this dependency ratio is actually impeding our national growth, which is also limiting household income, and that actually is limiting our national prosperity. And this disparity worsens as we climb higher. When we look at the global stage, women hold only 22% of executive roles as per United Nations Global Compact. But here in Pakistan, there is the stats show that only 63% of our corporate companies have fewer than 5% of women at senior management position. And this is the data that has been released by UNDP. So that means we are not suffering from lack of capable women. We are suffering from an infrastructure that has failed to retain them. This is why building internal compliance and workplace safety directly into our daily operations is structurally very much needed today. When we trickle down and pivot to our own home at ICAP, when we see that qualified female students are only 10% of our ICAP's total membership. Well, this is a very proud jump from 4% 2 decades ago, from 4% to 10%, but we still lag significantly behind our regional players, like that is just 22%, that is also 22% in India and 30% in Sri Lanka. When we look at the female intake, students intake, this is rising, and which is also showing that there is an immense talent and commitment coming up from our female students, and we see a very good number going forward, like maybe down the line 4 years we see a good membership coming up in terms of this male and female ratio. But it also tells us that we need to intentionally foster inclusive, safe corporate cultures, so that we will continue to, if we don't do this, then we will continue to lose our very valuable human capital to a leaky pipeline before they ever reach to a leadership position. So that's very important that we take informed and intentional steps to create an environment that we can actually include all the women at the higher position. Well, at ICAP, through the platform of CA Women Committee, we have been actually actively working on these scenarios, and we have been actively working on very key initiatives to make that environment inclusive for the women and safe. And I normally say that best way to ensure compliance with the law is to adopt these policies at the very heart of daily operations. It should not be only a checkbox
कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया. No, it has to be in everyday operations. It has to be inculcated in everyday routine, culture, mindset that we have to build in our corporate culture. So what we did at CA Women Committee, हमने एक Women Committee guide हमने publish की थी a few years ago. That was titled as Women Inclusion Guide in CA Profession and the Workforce. And this landmark framework directly aligns our profession with the United Nations Sustainability Development Goals 5 for gender equality. और फिर उसके ऊपर हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए, जिस तरह से वुमेन ऑन बोर्ड वाज एन इनिशिएटिव कि हमारी कॉर्पोरेट रूम्स में वी शुड हैव मोर एंड मोर फीमेल्स. फिर उसके अलावा देर री एंट्री प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए, जिसमें आप करियर ब्रेक के बाद जब हमारी फीमेल्स आती हैं तो उनके लिए हमें एक कल्चर क्रिएट करना है सो दैट दे कैन ज्वाइन बैक and they can contribute to our profession. And similarly, there we have been establishing dedicated counseling and tech skills training to keep female trainees economically active within ICAP activities. और हमने बहुत से mentorship programs भी हमने launch किए. That guide is just we have so far हमने उसको हमारे पास अभी जो है we are learning from Miss फौजिया विकार कि किस तरह से पॉलिसीज़ और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. अभी तक हमने उसको वॉलंटरी एडॉप्शन पे रखा है, बट उसको प्रमोट करने के लिए हमने डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड्स लॉन्च किया, जिसमें हमने डिफरेंट नॉमिनेशंस ली एंड वी हैव अवार्डेड. और फर्स्ट हमने लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया था एंड देयर वाज अ वेरी गुड रिस्पांस एंड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड आवर सीए फर्म्स पार्टिसिपेटेड इन दैट. और बहुत सी हमारी सीए फर्म्स को भी अवार्ड्स मिले, जिसमें उनकी कंप्लायंस से रिलेटेड बहुत से उन्होंने अच्छे एक्शंस लिए और जिसमें उनकी फीमेल इंटेक भी बढ़ी, उनकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ी, एंड डेफिनेटली दे आर कंट्रीब्यूटिंग गुड टू देयर प्रोग्रेस एंड ऑल दैट. Similarly, the purpose of this session was कि हम एक awareness create करें कि apart from those inclusive guide that has been published by ICAP, there is also something, a law that is present at Pakistan level. And thanks to Miss Fawzia Vakar that today we are discussing here, और जिसमें definitely अभी हम further भी इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और उससे हम कैसे benefit ले सकते हैं. There were some few of the suggestions जो मैंने थोड़ी सी एक मेरी internal उसमें है कि ये ज़रूर होना चाहिए. So we should always work in the work environment कि हम कुछ ऐसा code of conduct adopt करें for every accountancy firm and corporate employer, जो कि इसकी adoption भी करे और उसकी visibility भी हम ensure करें. So that is something that we may achieve down the line. Or internal code of conduct हो, and which may also be probably we will also love to hear from Miss Noor and Miss Fawzia कि हम जो हमारा एक्ट है वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट, उसके अंडर हम इसको किस तरह से फोस्टर कर सकते हैं. फिर कोई एक्टिव इंक्वायरी कमेटीज़ हों जो कि अडॉप्ट करें और उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करें, विच इज़ डेफिनेटली देयर इन द एक्ट. एंड देर इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंप्लेंट की और उसकी रेजोल्यूशन की कुछ टाइमलाइंस भी हैं जो आज अभी हम समझेंगे कि हम किस तरह से उनको रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड देर हैज़ टू बी सम awareness programs more and more, which is one of the program which is a very great initiative. और मेरा ये ख्याल है कि हमें इसके बारे में और इसी तरह के awareness sessions ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए. At the end, I would just like to say that true professionalism cannot exist without respect, accountability and safety. Giving women space in the workforce is not an act of benevolence. It is an act of economic intelligence. When we empower women, we liberate our entire economy from one-sided burden and open the doors to true prosperity. Let this session be the catalyst that transforms our workplace from the inside out. I extend my deepest gratitude to FOSPA and Ms. Fawzia Vakar and our esteemed speakers for participating with the CA Women Committee of Institute of Chartered Accountants of Pakistan to drive this crucial conversation forward. Thank you all for joining us today, and I look forward to an enlightening session. Thank you so much.
Well said, Miss Amara. Thank you so much. You have truly set the tone for today's session, and we will take that from here. Dear all, today's session is about understanding our rights, and there is no one more qualified to open that conversation than the woman whose life work has been protecting them. With herself, she brings every year of advocacy, every policy she fought for, and every woman she stood up for. We have with us Ms. Fozia Vikar, the Federal Ombudsperson for Protection Against Harassment of Women at Workplace, the highest institutional authority on this very issue in Pakistan. She is the founding chairperson of Punjab Commission on the Status of Women and led policy and legislative reform to eliminate violence against women. She has worked with the United Nations and international organizations across Pakistan on governance, accountability, and inclusion. It is my absolute honor to have Ms. Fozia Vikar with us today. Ms. Fozia, I request you to kindly take it from here. Thank you very much, Thalia. And thank you, Ms. Amara, for the excellent welcome and introductory note. I also want to thank Taha Bakai Saiba for coordinating with me and always being there to support my women's advocacy work. And I want to take this opportunity to also recognize Hina Usmani Saiba's work also, not only toward making an all-women CA women firm, but also being very thoroughly involved in this issue. एंड मैं ये प्रोसीजरली नहीं कह रही खाली, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज नाउ आफ्टर सो मेनी years of working on these issues, I've come to the conclusion that if you start the conversation, it gets somewhere. मगर मसले तब थे जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होती थी. और अगर मैं आपको एक पैरेलल मिसाल दूं तो आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं बाहर एक मुल्क में काम कर रही थी जहाँ पे मैं रेस काम कर रही थी, वुमेन्स राइट्स पे भी काम कर रही थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चिल्ड्रंस राइट्स के ऊपर भी काम कर रही थी. तो वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि ये तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं बच्चों के. चिल्ड्रन आर गेटिंग they are getting physically abused and in so many manners. I got very horrified. I had two young children and I thought कि मैं किधर लेके आ गई हूँ अपने बच्चों को. इस मुल्क में मेरे दो बच्चे जो हैं हाईली अनसेफ हैं. When I looked into matters, I realized that हमारे मुल्क में इससे बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल थे, especially of children's sexual exploitation and abuse. The problem was that we didn't talk about it. हम उसको रग के नीचे शव करते थे और हम समझते थे कि चीज़ों को छुपाने से चीज़ें चली जाती हैं. That does not happen, as we all know by now. For me, a similar parallel was drawn with women's rights also. I always got this response when I talked about women's rights for many years that हम तो अपनी औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, हमारे मुल्क में औरतें नहीं हैं. ग्रांटेड कि हमारे मुल्क में औरतों की इज्जत की जाती है, बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ राइट्स. It is a question of being an equal citizen of Pakistan. You are all chartered accountants and accountant women and with varying degrees. I'm assuming some of you must be students, fellows, जो भी होते हैं उनके. So at various stages of your life, and you get a lot of accountancy information. I hope that you've read the Constitution of Pakistan also, because the Constitution of Pakistan confers the right to dignity on women. It is given in Article 14. The Constitution of Pakistan confers the right to equality on women, and it requires the state to take special measures for empowering women and children. Or for those of you who do not have a legal background, I just want to explain कि जो right का लफ्ज़ है ना, ये बहुत ही powerful लफ्ज़ है. जब right confer हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के रहमो करम पे नहीं हैं, और ये रियासत के ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है कि उस राइट को एक्चुअलाइज करने के लिए वो तमाम मेजर्स ले जो कि उस राइट की अचीवमेंट एंड एंजॉयमेंट के लिए नेसेसरी है. तो ये जो अहम राइट्स हैं, द राइट टू डिग्निटी, द राइट टू इक्वालिटी, इनको अनपैक करने के लिए और भी बहुत सारी फंडामेंटल गारंटीज आई.
फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि women have the right to equal participation in public spaces. पब्लिक स्पेसेस में एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, पब्लिक स्पेसेस में बाजार भी आ जाते हैं, पब्लिक स्पेसेस में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है, और वो तमाम ऐसी जगहें जिनको पब्लिक कहा जाता है वो आ जाती हैं, विच मीन्स कि ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की जगह बट जहाँ आप सर्विसेज लेने जा रहे हैं वो सब चीज़ें आ जाती हैं। हरासमेंट जो एक अहम मसला है हमारे मुल्क का, चाहे वो उन पब्लिक स्पेसेस में हो जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं या उन पब्लिक स्पेसेस में हो जो एम्प्लॉयमेंट में जुड़े नहीं हैं, वो सारे राइट को, वो सारे जो जगह हैं उसमें हरासमेंट को डिनाई करता है। हाँ, कुछ जगहों पे फॉस्पा या प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन एक्शन ले सकते हैं अंडर द एक्ट ऑफ 2020, later amended, or Act of 2010, sorry, later amended in 2022, significantly amended। और कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें कि पुलिस को एक्शन लेना है अंडर आर्टिकल, अंडर पीपीसी का सेक्शन 509। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, you have the right to win public, and if it is denied, then you can invoke two different laws to get this right to dignity, this right to be free of violence. And harassment is a form of gender-based violence. You also have the right not to be discriminated in employment. That is also a constitutional guarantee. Not to be discriminated in employment का मतलब ये है कि women cannot be discriminated on the basis of gender from either being employed or from being given equal opportunity for growth or from being the equal to वो प्रमोशन भी हो सकती है और इट कैन टेक अदर फॉर्म्स। और इसके साथ साथ ये एक environment not free from, of course, is dignified, but also conducive towards your work, towards women's work, which requires washrooms, which requires crashes or daycare centers, as we call them in common parlance, which may require quiet rooms, which may require कि मर्द तो मस्जिद में चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बट औरतों के लिए जगह क्यों नहीं है। वो सारी चीज़ें ये इस कानून के तहत आती हैं, ख़ास तौर 2022 की। आई हैव माई टीम के हमारी एडवाइज़र हैं मैडम लुबना अली, जो कि सेशंस जज भी रही हैं, शिरकत कर रही हैं। नूर फातिमा हैं जो कि आगे कानून पे मज़ीद रोशनी डालेंगी, वो वकील हैं हमारे पास। यहाँ और भी बहुत सारे वकील हैं जो कि कुछ वजाहत कर सकते हैं, मगर आप ये वो कानून को तो तफसील में वो समझा देंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपके साथ बात करने का ये था कि कुछ द राइट होल्डर्स का कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस आपके अंदर मज़ीद इनकलकेट करूँ। एंड आई एम श्योर यू डोंट नीड इट, बिकॉज आप बहुत सारे बैरियर तोड़ के आई हैं और बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं। आई नो दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ नॉट अ मीन फीट। आई हैव अ चार्टर्ड accountant in my family, and I absolutely am familiar with how much effort was put into becoming a chartered accountant, and what uh, amount of time is consumed on a daily basis, even when you become qualified, before you qualify and when you become qualified, which becomes more difficult when you're a woman because of the fact that you have various challenges. One being कि रात तक आपके जो सीए के इंटर्न्स होते हैं या जो भी उनको कहते हैं, वो उनको रात तक बैठना होता है। ख़वातीन की सिर्फ सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर वो रात को देर से जाती हैं, विच मीन्स कि किसी एक फैमिली मेम्बर को उनको साथ छोड़ लेना है, छोड़ना है, लड़का करना पड़ता है। तो फर्म्स की शायद जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सेफ ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करें। अगर फाइनेंशियल कॉन्सिडरेशंस है और नहीं कर सकते तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अनदर ऑप्शन। वर्क फ्रॉम होम हम समझते थे एक गाली है, और ये औरतें जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट सिर्फ काम से बचने के लिए कहती हैं, बात करती हैं। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इक्वली इक्वल आउटकम हो सकता है, इक्वली इफेक्टिव काम हो सकता है अगर आप डिलीवरेबल्स को क्लैरिफाई करें और आप डिलीवरेबल्स बेस्ड ना
पर फोकस करें। वो ज़माना ख़त्म हो गया है जिसमें अटेंडेंस पे फोकस हुआ करता था। प्रोडक्टिविटी डज नॉट लाई ऑन यू वार्मिंग द बेंच, इट लाइज इन वार्मिंग द सीट, इट लाइज इन द आउटपुट. We need to become output focused. If women want to work from home, please give them that. And you ask for it also. But because delivery dictionary or in my experience is prime. Women unfortunately have to work twice because we have to responsibility, the professional responsibility. But ultimately, we are it, and inshallah, ultimately, we will reach a world where हमें ये balance रास्ता पेरेंटिंग मर्दों का भी मसला बनेगा। इस सिलसिले में मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करती हूँ कि हमारे पास एक पैटर्निटी लीव जिसमें गवर्नमेंट के स्टेट बैंक के एम्प्लॉय ने कहा कि उसको पैटर्निटी लीव नहीं देगी, एंड ही सॉ इट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उसने कहा कि कहाँ लिखा हुआ पेरेंटिंग खाली औरतों की जिम्मेदारी है, पेरेंटिंग आदमियों की भी जिम्मेदारी है। जिसके नतीजे में हम जो फैसला दे पाए थे, आई एम ग्लैड दैट ही ब्रॉट दिस केस बिफोर अस, जो फैसला दे पाए थे उसमें उसको पैटर्निटी लीव मैंडेटरी दी गई। और ऑर्गेनाइजेशन पे भी ये बात, parenting is a joint responsibility. As this understanding and as this uh, or this access to this right grows, people will, the narrative will change, become more and more cognizant of the added responsibility, and they will be willing to take that responsibility. Societies will change. This conversation, this awareness today, I hope is going to be a stepping stone towards changing the narrative and shaping the to become more equitable and to become more safe and dignified for all our women and men of Pakistan. Thank you to ICAP and to CA Women at this F. We are here at every step. You just have to tell us and we will read. Thank you again. Thank you so much, Ms. Fozia, for sharing your time. We are truly grateful for your guidance and the work you continue to do for the empowerment of women in Pakistan. Ladies and gentlemen, we now move forward to the heart of today's session. A comprehensive session that will walk us through what workplace harassment actually means under the law, what our rights are, and what we can do about it. Presenting today, we have Ms. Noor Fatma, Assistant Law Officer at FOSPA. Her work focuses on legal framework for the protection against workplace harassment and gender-based discrimination. She has also been actively advocating for making workplace safe for all women. Today, she will be sharing valuable insights on understanding, preventing, and addressing harassment in the workplace. So I request Ms. Noor Fatma to please join us today. Floor is yours. Over to you, Ms. Noor. Thank you so much, Talia, for this introduction. I will be moving forward with the presentation today on harassment at workplace. If you could just play it, if you could share the screen, or if you want me to share the screen, I could do the same. So since I actively try to interact with the participants, my first question is going to be from the slide number 2. And the question is very basic, but I want everybody to participate and answer. What do you think is harassment? What is the basic definition that comes into your mind when you listen to harassment? And after receiving your responses, I will highlight what falls under our Act of 2010, which was subsequently amended in the year 2022. Okay, so we are receiving responses through chat boxes. Anything which leads us to being submissive, scared, yes, violation of personal space. Absolutely. So yes, anything that makes us feel uncomfortable. So if I talk about the definition, which I will be talking about in detail, harassment is basically any unwelcome advance. Now that advance can be sexual or non-sexual in nature. We will be describing and discussing two major forms of harassment that falls under the Act of 2010.
The classification is based on sexual harassment and gender-based discrimination. These two are wider categories, which we will be discussing point by point. If you could just move forward to the next slide. So the important thing to understand is, why did we make a law specifically for harassment at workplace? So in order to understand this, we need to understand the laws that existed to protect people and especially women outside the workplace. So we have Pakistan Penal Code that protects women against any person who insults her modesty. There's an index displaying over here, which says that 82% women face harassment on public transport. And globally, Pakistan is considered as the fourth worst country in Women Peace and Security Index. Considering all of this, it was important to ensure that things that happen outside the workplace should not happen during our 9 to 5 shifts, or as the case may be, as the role of employment is. It was important to address that it is not necessary that you are only harassed during your working hours. What constitutes as harassment outside the workplace, and what places are considered as workplace when you are not in office but you are performing your official duties, is something that this act highlighted. Moving forward to the next slide, we would see that the section 509 that was discussed before, insulting modesty or causing sexual harassment. This is at any place. This is a penalizing provision. You can be imprisoned and you can be fined under this provision. However, the Harassment at Workplace Act is limited to a particular environment where you are rendering your services as an employee, and there is an employer and employee relationship. The next slide, if we move forward to it. The basic question is that why the law was amended or why the act was enacted. So the basic mandate and vision as displayed on the slide number 6 is that FOSPA, Federal Ombudsperson Secretariat for Protection Against Harassment, जो कि बहुत बड़ा नाम है याद करने में, उसका acronym is FOSPA. नाम बहुत बड़ा है, काम भी बड़ा है. It is a quasi judicial body. Now it is important to understand that we cater to provide quick justice. Now quick justice means कि हम ideally 90 days के अंदर केस की रेजोल्यूशन जो है उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं. कंसीडरिंग कि जब आप कोर्ट में जाते हैं एज अ लॉयर, इफ आई कुड गिव अ फ्यू पॉइंटर्स ऑन इट, आपको तारीख पे तारीख मिलती है, साल हर साल आपका केस चलता है और उसके बाद आपको डिसीजन मिलता है. However, at FOSPA, we try to decide the case within a period of 3 months. It is free of cost. It is not necessary कि आपको कोई lawyer accompany करे. You can come forward as a complainant or an accused or as a witness, and the legal team of FOSPA will guide you. Of course, it is your discretion in order to understand the legal procedure and the case that will move forward, whether it is the cross-examination of the witnesses, submission of evidence, the basic language that is to be incorporated in the complaint. You can hire a lawyer for it. But of course, we do guide. Our panel does guide regarding the legal requirements. It is a statutory body that was that came into existence under the Act of 2010. We also empowered the employers that if a person has come to you complaining regarding harassment at a workplace, you should provide psychosocial counseling to that person. And if that person requires additional leave, then that needs to be granted as well. We will be discussing all these pointers in detail. Moving forward to the next slide, we would see why harassment is widely discussed in the definitions. So since Section 2, subsection H of our Act 2010 discusses about harassment. So as discussed before, there are two categories. The first one is sexual harassment, which is discussed in 2H1 in slide number 7. And the second one is 2H2, which is discussed in slide number 8. Starting from the slide number 7, we would say that the answers that I received first in the chat box were any unwelcome or unnecessary advance is sexual harassment. Absolutely.
Anything that makes you feel uncomfortable, that is sexual in nature, that is either made an important or mandatory thing to do before you join the workplace, or has been told that if you don't do this, a retaliatory action will be taken against you, is sexual harassment. Now, it is important कि हम ये acknowledge करते हैं कि it is not necessary कि only physical conduct is sexual harassment. It can be a WhatsApp message, it can be a gesture, it can be a verbal derogatory remark, it can be anything that will make you feel sexually uncomfortable and that you think that is pointed to you in order to humiliate your dignity. It can be an attitude as well. So this definition discloses everything, whether it is a one-time message or even if somebody is at your workplace और वो आपको दूर से ही इशारा कर दे, that is derogatory in nature, that is sexual harassment, and it creates hostile environment. People who are subjected to sexual harassment, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने काम पे फोकस करें. उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी, unka output, everything is impacted. And at the end of the day, either they resign from their workspace or they take additional leaves that impact their own work performances. Moving forward to the next slide, Section 2H2, which talks about discrimination on the basis of gender. Gender-based discrimination क्या है? आपने मुझे सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन तो दे दी है. अगर आप मुझे बता सकें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है और इस डिस्क्रिमिनेशन को हम हरासमेंट क्यों कहते हैं? If I could receive the answers regarding the same, so I can move forward. No equal opportunity. This is the first response that we have received. This is absolutely right. Discrimination on the basis of gender ये इंक्लूड कर सकता है कि अगर एक जेंडर को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो दूसरे को ना मिले, कुछ राइट्स आपके ऐसे डिनाई कर दिए जाएं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जेंडर से ताल्लुक रखते हैं. इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ, जो कि मैं यूजुअली इसी को प्रीच करती हूँ. अक्सर जॉब पोस्टिंग्स में लिखा जाता है बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई. नाउ दिस sounds discriminatory क्योंकि there is a third gender that is neither male nor female और आपने उसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया और आपने सिर्फ दो जेंडर्स को अलाउंस दे दिए. सो द लैंग्वेज, मे बी द इंटेंट इज नॉट बैड, बट द लैंग्वेज नीड्स टू बी इंक्लूसिव एज वेल, ताकि वो बायस ना हो, ताकि कोई प्री सपोज्ड माइंडसेट या नोशन ना हो. प्री जुडिशियल माइंडसेट और नोशन जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि आप हम अपने जहन में पहले ही एक चीज सोच लेते हैं कि ये लड़की है तो हो सकता है ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड वर्क कर सके, फील्ड वर्क नहीं कर सकती. अगर आपकी प्रमोशन बनती होगी तो आपकी प्रमोशन आपको डिनाई कर दी जाएगी, कंसीडरिंग कि ऑफ कोर्स यू हैव टेकन मैटरनिटी लीव, यू वर नॉट प्रेजेंट एट द वर्क प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो जब आपने वर्क आउटपुट ही नहीं दिया तो हम आपको जो है कैसे कंसीडर कर सकते हैं फॉर अ हायर अपॉर्चुनिटी. एंड वाइस वर्सा, men also face discrimination on this basis. There are quite some colleges that enroll women as doctors, but men are not respected for the same. Male nurses do not receive the same respect as that of female nurses. जो एयर स्टीवर्ड्स होते हैं उनको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिस तरह से एयर होस्टेस को दी जाती है किसी भी एक एयरलाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. So these are the things that are discriminatory in nature, and that is something that our Act of 2010 bars. Moving forward to the next slide, we would discuss कि किस तरह से ये जो behavior है ये आपके लिए offensive और hostile हो सकता है, और also कि अगर कोई complainant कोई aggrieved party है, हम aggrieved party का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको अक्सर डर होता है कि कोई इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो जाएगी. इंतकामी कार्रवाई इज रिटेलिएशन व्हिच इज बार्ड अंडर आवर एक्ट. कि अगर हम रिफ्यूज कर दें कि नहीं वी विल नॉट ग्रांट यू सेक्सुअल फेवर्स, तो कहा जाए कि आपको यहाँ तो जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स या एसीआर रिपोर्ट्स को इम्पैक्ट किया जाएगा, और आपके जो राइट्स जो आपके बनते हैं लीगल फंडामेंटल राइट्स वो आपको नहीं दिए जाएंगे इस वर्क प्लेस पे, बिकॉज यू हैव नॉट लिसन टू अस. दिस इज रिटेलिएशन और ये हम बार करते हैं. देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट
ज़ाब्ता अखलाक जो कि हम एम्प्लॉयर्स को जो है मैंडेट करते हैं कि दैट दिस नीड्स टू बी डिस्प्लेड एट कंस्पिक्यूअस पार्ट्स ऑफ द वर्क प्लेस। एक ऐसी दीवार हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे एवरीबडी कैन सी एंड कैन रीड के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है, और अगर हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो रही है तो उसके अगेंस्ट एक्शन किन के पास लिया जा सकता है, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर द सेम। ऑल्सो द फैक्ट कि आपको डिफेम किया जाए अगर आपने कंप्लेंट फाइल कर दी है, दिस इज ऑल्सो बार्ड। गॉसिपिंग रिगार्डिंग द कंप्लेंट और एनीथिंग दैट pertains to the contents of the complaint is discouraged। इसको कॉन्फिडेंशियल रखना जो है वो एम्प्लॉयर की, ऑर्गेनाइजेशन की और इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदारी है। नाउ वी विल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ सिनारियोज यहाँ पे लिखे हैं as the definitions have already been discussed, we would move forward with the scenarios। If we could just move towards the slide number 12। So the slide number 12 tells us who can file a complaint। हमारे एक्ट से अक्सर लोग जो है ये एक मिसकंसेप्शन होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि दिस एक्ट इज ओनली फॉर वुमेन, कंसीडरिंग के नाम में आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। हाउएवर ये एक्ट जो है ये तमाम जेंडर्स को प्रोटेक्ट करता है, वेदर यू आर अ मेल, फीमेल और अ ट्रांसजेंडर। तो एनी पर्सन हु कैन कंप्लेन के बाद एक एरो है, उसके बाद लिखा हुआ है एनी पर्सन। सो disregarding your gender, if you are aggrieved of harassment at workplace, you can move forward with your complaint। And it is also necessary to understand कि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है तो अब वो कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ या अपने कलीग के खिलाफ। तो दिस इज समथिंग दैट वी एनलाइटन एंड अवेयर पीपल एवरी टाइम कि हम अंडरस्टैंड करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, और हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अक्सर आपको डर होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कोई हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करने का। इवन दो हम ये प्रीच करते हैं द सूनर द बेटर, हाउएवर इफ यू कुड नॉट कम फॉरवर्ड विद योर कंप्लेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, आप फॉर्मर एम्प्लॉय के तौर पे भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इन केस यू आर अ माइनर, आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट और गार्डियन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पे माइनर्स को कंप्लेनेंट स्पेशली वर्क प्लेस हरासमेंट में क्यों कंसीडर किया है और क्यों उनके बिहाफ पे पेरेंट्स या कंप्लेनेंट्स फाइल कर सकते हैं, और एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं। ऑल्सो देयर इज अ पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन कि हम एक्नॉलेज करते हैं देयर इज नो प्री कंसीव्ड माइंडसेट कि सिर्फ मर्द ही औरत को हिरासा करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि any gender can harass any gender, whether you are a transgender you can harass both the genders, whether you are a male you can harass both, even a man and even a woman, and if you are a woman you can also harass a woman as well as a man। So it is important कि हम हर चीज को acknowledge करते हैं, there is no preconceived notion regarding the same। If we move forward to the next slide, we would see the definition of organization। Since our act is federal in nature, तो हमारी जुरिस्डिक्शन की अगर बात की जाए, हमारा इख्तियार समात क्या है, उसमें हम स्लाइड नंबर 13 में ये देखेंगे कि हमारी जुरिस्डिक्शन तमाम फेडरल इदारों के ऊपर है। उसके साथ साथ वो इदारे जो ट्रांस प्रोविंशियल इन नेचर हैं, कि अगर आपका एक ऑफिस लाहौर में है, दूसरा ऑफिस आपका कराची सिंध में है, तो आपका एक ट्रांस प्रोविंशियल स्टेटस डेवलप हो जाता है। कंसीडरिंग दैट फेडरल एक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है। हाउएवर अगर कोई प्रोविंशियल मैटर है, अगर आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ पंजाब में या सिर्फ सिंध में या एनी अदर प्रोविंस में सिर्फ एग्जिस्ट करती है, इट हैज नो फेडरल और ट्रांस प्रोविंशियल करेक्टर, तो फिर उसके लिए आप प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन को अप्रोच कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टू द जुरिस्डिक्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू स्लाइड नंबर 14, आई वुड से वर्क प्लेस की डेफिनेशन क्या है ना। वर्क प्लेस की डेफिनेशन हम अक्सर सोचते थे कि सिर्फ 4 दीवारियां हो, ऊपर छत हो, तो हम कहते हैं कि भाई ये वर्क प्लेस है, ये एक ऑफिस है, और अगर यहाँ पे आप हरास हो गए तो आप कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रीलांस एम्प्लॉयर्स
भी जो अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, किसी कैफे में बैठ के अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज पर्सन्स आर कंसीडर्ड टू बी वर्किंग। और उनका वो जगह जहां से बैठ के वो काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, वो जगह वर्क प्लेस कहलाती है। फिर चाहे वो कॉन्सर्ट हो जिसमें आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हो, फिर चाहे वो कोई रोड साइड हो जहाँ पे कैनवस लेके एक पेंटर बैठ के स्केचेस बना रहा हो। It is important to understand that any place where you are performing activities or rendering your services is called as a workplace. The definitions are written over here. Even यहाँ पे एक बात और भी है जो यहाँ पे डिस्क्राइब है, an open area or a larger geographical area. ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? The important thing to note is कि अगर आप अपनी work activities outside the workplace जाके perform कर रहे हैं, for example, आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, एक बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हुए हैं, चूंकि आप काम के सिलसिले में ही बाहर गए हैं, और अगर आपको उस दौरान कोई हरास करता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी वुड सी कि हम एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में किसको लेके आते हैं। एम्प्लॉय क्या है, ऊपर हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस स्लाइड्स कि हम देखेंगे कि माइनर कैसे कंप्लेन फॉरवर्ड कर सकता है और उसके बिहाफ पे पेरेंट्स या गार्डियन कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं कंप्लेन। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय के डेफिनेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हो। हम वर्क प्लेस की डेफिनेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल फैसिलिटीज को भी लाते हैं, कंसीडरिंग कि टीचर्स को एम्प्लॉयर का स्टेटस मिल जाता है और स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय का। तो अगर वो अपनी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटी के दौरान हरास होते हैं या अपने पढ़ाई के दौरान हरास होते हैं, तो वो भी कंप्लेन फॉरवर्ड कर सकते हैं। इवन अदरवाइज इफ यू आर अ वॉलंटियर वर्कर, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके सर्विसेज के बाद, तो भी आप एम्प्लॉय ही कंसीडर होंगे, तो भी वो आपकी वर्क प्लेस ही कंसीडर होगी। इवन आपके घर के करने वाले जो मुलाजमीन है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, हाउस हेल्प्स है, मेड्स हैं, सर्वेंट्स है, वो भी एम्प्लॉय कंसीडर होते हैं। और अगर आपको घर पे उनको घर पे कोई हरासमेंट का सामना हो, तो आप उनके एम्प्लॉयर होंगे एंड दे कैन ऑल्सो मूव फॉरवर्ड विद द कंप्लेंट। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयज हैं वो फिर फेडरल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे, वो प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन में आएंगे, क्योंकि उनका वर्क प्लेस आपकी घर होगा। और आपके घर का एड्रेस वो ऑफ कोर्स, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर will fall in the province of Punjab and accordingly provincial ombudsperson की jurisdiction बन जाती है। Intern, trainee, any sports person, any person is considered as an employee। बेसिक ये है कि सिर्फ आप काम कर रहे हैं और कोई शख्स आपसे काम करवा रहा है तो आप एम्प्लॉई। मूविंग फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की सबसे इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ये है कि जो इंसान आपसे काम ले रहा है और उसके इवज में या तो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है इफ यूर अ वॉलंटियर वर्कर, या आपको पैसे दे रहा है, या इवन अदरवाइज आपकी एक कंसीडरेशन है, देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर परफॉर्मिंग वर्क फॉर द पर्सन एंड दैट पर्सन इज टेकिंग योर सर्विसेज, वो एम्प्लॉयर है। फिर चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड और दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसीडर्ड एज एन एम्प्लॉयर। द नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट कि वो क्या चीजें हैं जो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। हम अक्सर जो है ये जरूर सुनते हैं कि एम्प्लॉयज की ये जिम्मेदारियां हैं, डेडलाइंस टाइम पे पूरी करनी है, क्लॉक इन टाइम पे करना है, आप ओवर टाइम तो कर सकते हैं लेकिन क्लॉक आउट आप पहले नहीं कर सकते। ये सारी एम्प्लॉयज की जिम्मेदारियां। हाउ एवर एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी में आ जाता है कि उसने एक ज़ाब्ता इखलाक जो है वो डिस्प्ले करना है, उसने एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करनी है, और फॉर्म करने के साथ साथ उसने ये भी अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करना है कि इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स कौन है, और इंक्वायरी कमेटी के अलावा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट जो करती है उसकी डिक्लेरेशन होना भी लाजम है। अगर इंक्वायरी कमेटी हमारे एक्ट 2010 के सेक्शन 3 के तहत नहीं फॉर्म की गई, जिसमें 3 मेंबर्स का होना लाजिम है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसकी नॉन फॉर्मेशन पे 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है। सो दिस इज द punitive provision of law, which means that this is mandatory for an employer to have an inquiry committee जिसके पास harassment at workplace की complaints लेके जाया जा सके।
इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि एम्प्लॉयर ट्रेनिंग करवाए अपने एम्प्लॉयज की और ये अंडरस्टैंड करवाए कि कौन सी चीजें प्रोफेशनल बैरियर को ब्रीच करती हैं and how to maintain a professional boundaries between employees and the employee and the employer. So the next slide, the slide number 18. We would see कि इंक्वायरी कमेटी की कॉम्पोजिशन में 3 लोग जो हैं उनमें क्या है मैंडेटरी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट आई विल डिस्कस दिस कि एक member out of the 3 should be a woman. This is a mandatory provision. This is not something that can be overlooked. The other 2 mandatory things are कि एक senior management में से बंदा होना चाहिए. A person can be a male or a female or a transgender as the case may be, और एक सीनियर एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. ऑल दीज 3 पीपल विल कंप्राइज एज द मेंबर्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी और इन्हीं 3 मेंबर्स में से कोई एक जो है वो चेयरपर्सन जो है कंसीडर किया जा सकता है उस इंक्वायरी कमेटी का. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको कंप्लीटली कंप्लाई नहीं कर सकती अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में कि एक खातून हो, एक सीनियर मेंबर हो, एक एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव हो या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट हो. तो उस सिनेरियो में दे कैन ऑप्ट आउट और वो बाहर से किसी को मेंबर बना सकते हैं इंक्वायरी कमेटी का. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसकी इंफॉर्मेशन हर एम्प्लॉय को होना लाजिम है कि वो मेंबर्स कौन से हैं. कुछ इंडस्ट्री एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ फैक्ट्री एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ मर्द काम करते हैं, तो दे कैन ऑप्ट आउट एंड दे कैन इंक्लूड अ वुमन आउटसाइड from the workplace जो इंक्वायरी कमेटी की मेंबर हो. The next slide we talk about the mechanism of or the procedure of holding an inquiry. So if you move forward to the slide number 19, we see कि अगर आपके पास कोई complainant as an inquiry committee आपके पास कोई complainant अपनी complaint आता है तो उस पर आपने एक्शन कैसे लेना है. जैसे ही complaint आपको रिसीव हो जाए 3 दिन के अंदर ही आपने एक्यूज को समन करना है. मुलजिम एक्यूज से मुराद वो है जिसके खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगाई गई हैं. 3 दिन के अंदर आप उनको बुलाएंगे अपने सामने और उनको बताएंगे कि ये एलिगेशंस जो हैं तुम्हारे खिलाफ की गई हैं. आप उनको कंप्लेंट की कॉपी देंगे और फिर उसका बाद एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 7 दिन का. उन 7 दिनों में विद इन अ पीरियड ऑफ अ वीक द एक्यूज इज टू सबमिट अ रिटन डिफेंस जिसमें वो अपना दफा कर सके और बता सकें कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है. आफ्टर द कंप्लेंट एंड द रिटन स्टेटमेंट, जिस तरह एक लीगल प्रोसीजर होता है, वेदर यू रिक्वायर टू कलेक्ट एविडेंसेस, वेदर यू रिक्वायर के विटनेसेस जिनके नाम कंप्लेनेंट और अक्यूज दोनों ने दिए हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए और उनकी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाए. कंप्लीट केस क्लोजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि तमाम लीगल प्रोसीजर ये फॉलो हों और उसके बाद आपका एक फाइनल डिसीजन आप रिटन में अनाउंस करें. ये ना हो कि कंप्लेनेंट को भी नहीं पता कि उसकी कंप्लेंट को क्या हुआ है और एक्यूज को भी नहीं पता कि उसके खिलाफ जो एलिगेशन या चार्जेस लगाए गए थे उसके खिलाफ वो हटे भी हैं या फिर वो एडमिट हो गए. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि कुछ रिकमेंडेशंस या फाइंडिंग्स जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाए एंड दैट नीड्स टू बी फॉरवर्डेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो होगी जो इंक्वायरी कमेटी के सीनियोरिटी में हायरार्की में ऊपर होगी और उसके खिलाफ जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो उस पर खुद डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सी पेनल्टी अंडर सेक्शन 4 जो है ऑफ आर एक्ट 2010 को इम्पोज की जा सकती है. किसी को क्वेश्चन आया है, इज इट अ फिक्स टाइम पीरियड फॉर 7 days? इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने टाइम पीरियड ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं. यस, हाउएवर इफ देयर इज अ डिले फ्रॉम योर साइड तो आपने वो डिले जस्टिफाई करना होता है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. Even otherwise, मैं आपको कहूंगी कि जो भी questions हैं, those will be written over here in the chat box. And in the end, our regional head, Ms. Rupna, will be addressing each question that is moved forward over here. So I believe I have answered your question. अब अगर हम अगली slide पे चले जाएं, अब ये important है, अक्सर complainants को और accused को verbally बता दिया जाता है कि सेक्शन 4 के तहत आप पे एक्शन ले लिया है, लेकिन क्या वो माइनर पेनल्टी है, क्या वो मेजर पेनल्टी है? अगर माइनर है तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करी है विच इज डिस्क्राइब्ड अंडर आवर एक्ट ऑफ 2010? मेजर है तो क्या डिसमिसल ऑफ सर्विस है, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस है, क्या है? वी विल बी डिस्कसिंग दीज पेनल्टीज इन डिटेल्स in the subsequent slides. However, it is important कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन जो है
वो विद इन 30 days अनाउंस करें विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ, सो दैट nobody is left hanging और सबको पता हो कि डिसीजन क्या हुआ है. Also, it is important कि competent authority, inquiry committee, organization or witnesses, all the parties involved in the case should maintain confidentiality of the proceedings, because it is important to understand that harassment is a very sensitive project and people are not confident to move forward with their complaints अगर उन्हें पता हो कि लोग गॉसिप करेंगे बाद में उसके बारे में. और अगर कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है या एक्यूज के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाता है तो उनको फिर किस तरह का रिटालिएटरी एक्शन लेना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, और किस तरह से वो एक स्टिग्मेटाइज्ड इंडिविजुअल की तरह वो काम करेंगे. तो अब इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमने बताया कि इंक्वायरी कमेटी के पास कंप्लेंट जाती है तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं, उसी तरह अगर फॉस्पा के पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम कैसे हैंडल करते हैं. अब इंक्वायरी कमेटी के पास कंप्लेंट फॉरवर्ड करें या फॉस्पा के पास आए, ये डिस्क्रेशन है कंप्लेनेंट. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप साइमल्टेनियस कंप्लेंट्स नहीं फाइल कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंक्वायरी कमेटी के पास ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल की हुई है और उसकी मौजूदगी में, उसकी पेंडेंसी में ही आप आए और आप फॉस्पा पे भी कंप्लेंट फाइल कर दें, ताकि डबल जेपर्डी हो सके एक्यूज्ड की. दिस इज समथिंग दैट इज बार्ड बाय आवर एक्ट. वन कंप्लेंट नीड्स टू बी विथड्रॉन to be so that you can move forward with the second complaint. तो हमारा स्पीडी जस्टिस सिस्टम है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days. लॉयर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जिस तरह मैं हमारी सेकेंड स्लाइड जो मैंडेट एंड विजन की थी उसमें डिस्क्राइब कर रही थी. हम आपको यहाँ तक फैसिलिटेट करते हैं कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन पर्सन के, आप फॉस्पा की अदालत में आए और अपना केस कंटेस्ट करें. अगर ऐसी कोई बात है, इफ यू आर बार्ड कि आप शहर से बाहर हैं या आप खुद नहीं आना चाहते हैं, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो हम आपको जूम लिंक के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी लेते हैं और आपका पूरा केस उसके ऊपर भी डिसाइड होता है. हमारे ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम फाइलिंग द कंप्लेंट टिल द फाइनल डिसीजन, द कंप्लेनेंट हैज नॉट कम फॉरवर्ड टू दिस फॉरम, और सारा उनका जो प्रोसीजर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही लिया गया है in order to understand कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि if you cannot leave your workplace, move forward with your complaint, तो आप जो है घर बैठ के भी अपना स्टांस हमें नरेट कर सकते हैं. डिसीजन हमारा जल्दी आ जाता है, जो कि हमने आपको पहले ही भी बताया है. डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए वर्क प्लेस में, वी इंश्योर दैट. और अगर आप इसी चीज से अग्रीव्ड है तो वी इंश्योर कि आप इसकी ग्रीवेंस का हम आंसर दे सके if you establish the contents of your complaint. The next slide, slide number 21. We will see कि contents क्या होने चाहिए complaint के. अब complaint के contents पे understand करना इसलिए important है, जो slide number 21 में mention है कि अक्सर लोग एक पैराग्राफ लिख के दे देते हैं कि ये हमारी complaint है. This is not how a judicial procedure or a quasi-judicial procedure can be taken forward. It is important कि आपने अपनी तमाम डिटेल्स दी हो, आपने एक्यूज्ड पर्सन एक या एक से ज्यादा जितने भी हैं उनकी तमाम डिटेल्स दी हो, whether it is the address or the phone number. कंसीडरिंग कि जब आपकी कंप्लेंट हम एडमिट कर लेते हैं तो हमने नोटिसेस इशू करने होते हैं टू समन द पार्टीज, टू समन द एक्यूज्ड फॉर सबमिशन ऑफ देयर रिटन डिफेंस. अगर आपने हमें डिटेल ही नहीं दी होगी तो वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद योर कंप्लेंट. फिर आपके जो कॉन्टेंट्स है दैट नीड्स टू एस्टैब्लिश के वेदर सेक्सुअल हरासमेंट हुई है आपके साथ, क्या ऐसी बातें थी जो आपको कही गई, क्या ऐसे इंसिडेंट्स थे जो हुए. ऑल्सो अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो ऐसे कौन सी सिनेरियोज थे जिनकी वजह से आपको लगा कि यू आर डिस्क्रिमिनेटेड कि कंसीडरिंग दैट यू आर अ वुमन, मैन और अ ट्रांसजेंडर. और आपके साथ सिर्फ ये हादसा ना होता अगर आप किसी दूसरे जेंडर से बिलोंग करते, या आप देखें कि देयर इज डिस्टिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन कि आपके जो फेलो कलीग है फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है. ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी लेबल्ड. आपका पैराग्राफ नंबर्स वाजिया होने चाहिए, उसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी है. उसके साथ साथ आपके CNIC की एक कॉपी होनी चाहिए. इफ यू हैव द CNIC कॉपी ऑफ द एक्यूज्ड, ग्रेट, नहीं तो वो अपने रिटन डिफेंस के साथ हमें देंगे. द लिस्ट ऑफ विटनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपके पास कंप्लेंट तो है, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है अपना केस साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं आपके हक में आके,
उनकी आपने लिस्ट भी प्रोवाइड करनी है। इन केस यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट। अगर आपके कोई गवाह ही नहीं है या कोई आगे ही नहीं आना चाह रहे, तो फिर हम आपके एविडेंस को कंसीडर करते हैं, द एविडेंस दैट वी हैव बिफोर अस ऑन द फाइल। फिर अगर हम मूव फॉरवर्ड करें कि कंप्लेंट के कंटेंट्स तो हमने देख लिए, फिर कंप्लेंट के कंटेंट्स के बाद इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी सबमिशन ऑफ एफिडेविट की एक स्टेज भी आती है, जिसमें आपने लिखना होता है कि आपने जो भी कंटेंट्स कहे हैं या लिखे हैं वो टू द बेस्ट ऑफ योर बिलीफ एंड यू हैव नॉट कंसील्ड एनी फैक्ट। इट इज अ फॉर्म ऑफ एन अंडरटेकिंग, क्योंकि जब बाद में आपका एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो वो ओथ पे होता है, जहां पे आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान की गवाही देते हैं कि मैं जो कहूंगा या कहूंगी सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं झूठ कहूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। इस ओथ के साथ फिर आपकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, और आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ कोर्स देयर आर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद फिर फॉस्पा अपना डिसीजन दे देता है। नाउ द स्लाइड नंबर 22 एंड 23 रिलेट्स कि आप किस तरह से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कंसीडरिंग कि वी आर इन एन एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो हम ऑनलाइन कंप्लेंट की फैसिलिटी भी देते हैं और मैनुअल कंप्लेंट की भी। उन लोगों के लिए जिनके लिए डिजिटलाइजेशन इतनी आसान नहीं है, वो मैनुअल कंप्लेंट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट में व्हाट यू डू इज कि आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, एज मेंशन्ड ऑन द फर्स्ट पॉइंटर www.fospa.gov.pk। वहां पे एक कंप्लेंट फॉर्म आपके सामने आ जाता है। यू क्लिक ऑन दैट फॉर्म, यू ऐड द डिटेल्स, आपकी डिटेल्स, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके बाद जो कंप्लेंट बॉक्स होता है, उस कंप्लेंट बॉक्स पे आपने पूरी डिटेल देनी होती है, उस एक्यूज पर्सन का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, जो आपके साथ हरासमेंट का वाकया हुआ, और ऑल द नेसेसरी डिटेल्स दैट एस्टैब्लिश योर केस, जिसके बेसिस पे हम आपकी कंप्लेंट को ऑनलाइन एडमिट करते हैं। ऑल्सो ऑनलाइन कंप्लेंट में एक और मैकेनिज्म ये भी आ जाता है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडीज आर अवेलेबल अपॉन आवर वेबसाइट, तो व्हेन यू चेक इट, आप ईमेल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉस्पा को। अगर आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं तो ऑफ कोर्स आप रीजनल ऑफिस लाहौर को अप्रोच कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम कराची एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम कराची, तो आप कराची में जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेसेस से शहर के नाम से थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर द सेम। जो स्लाइड नंबर 23 है, वी डिस्कस अबाउट द मैनुअल कंप्लेंट, कि हम आपके हाथ की लिखी हुई कंप्लेंट, चाहे आपने खुद लिखी हो किसी पेन से या हमने प्रिंट आउट करवाई हो, हम उसको भी एड्रेस करते हैं। हमारी लीगल टीम गाइड करती है कंप्लेनेंट्स को कि क्या उसके कंटेंट्स होने चाहिए, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके मैनुअल कंप्लेंट हो या ऑनलाइन कंप्लेंट हो, जो आपने ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड की हो, उस पर आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। विदाउट सिग्नेचर्स किसी स्कूल की एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं होती। तो दिस इज अ जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल प्लेटफॉर्म, जहां पे इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप आ रहे हैं तो आपका थंब इम्प्रेशन, आपके सिग्नेचर्स आपकी कंप्लेंट के ऊपर होने चाहिए। Also, since we have discussed the online and the manual complaint mechanism, it is important to understand कि अब हमारे पास as ombudsperson secretariat क्या इख्तियारात हैं, which is available on the slide number 25 and 24। तो पावर और जो हमारी जुरिस्डिक्शन है वो ऑफ कोर्स जैसे कि पहले डिस्कस किया गया है कि हम फेडरल या ट्रांसप्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केसेस लेते हैं। हमारे पास वही इख्तियारात हैं जो किसी सिविल कोर्ट के पास होते हैं, वेदर फॉर समनिंग द एक्यूज्ड। अगर एक्यूज्ड अपेयर ना हो तो हम लोग थ्रू बेलेबल वारंट्स, थ्रू अटैचमेंट ऑफ एनीथिंग देयर सैलरी, हम उनको कंपेल कर सकते हैं टू अपेयर बिफोर दिस फोरम, और चाहे वो विटनेस हैं तो वो अपनी गवाही दें, चाहे वो एक्यूज है तो अपने दिफा में कोई जवाब दें। वी कैन कंपेल दैट अकॉर्डिंगली। अगर आप कोई कंटेम्पचुअस एक्ट करते हैं, तो हीने अदालत करते हैं, तो वी हैव पावर्स एज दैट ऑफ द हाई कोर्ट। तो दीज आर आवर पावर्स। ऑल्सो अगर कोई केस हमारे पास चल रहा है, इट इज पेंडिंग बिफोर आवर फोरम, और उसमें कोई कंप्लेनेंट हाईलाइट कर देता है कि वहां पे प्रॉपर अंडर आवर एक्ट ना ही कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्लेड है, ना ही इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश्ड है, ना ही इंक्वायरी कमेटी अगर इस्टेब्लिश्ड है तो उसमें से जो हमारी मैंडेटरी प्रोविजन है कि एक खातून होने चाहिए, एक सीनियर मैनेजमेंट से बंदा होना चाहिए और एक एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ इस्टेब्लिश नहीं है, देयर इज नो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फिर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं कि हम एज अ कमिश्नर
वहां पे जाएं और जाके इन्वेस्टिगेट करें उस प्रेमिसेस को, एंड वी कैन एंटर एनी प्रेमिसेस अंडर आवर एक्ट, वी हैव द पावर टू डू सो. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास और क्या इख्तियारात हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास पावर टू रिव्यू है. हम अपने ही ऑर्डर के खिलाफ जो है, आप हमें नजर सानी का कह सकते हैं. रिव्यू इज बेसिकली अ लीगल टर्मिनोलॉजी जिसको उर्दू में नजर सानी कहते हैं, कि अगर हमने कोई ऑर्डर पास किया है, यू सी कि आपको लगता है कि वो ऑर्डर ठीक नहीं है, तो आप अपनी रिकमेंडेशंस जो है एक एप्लीकेशन के सूरत में जो है हमें दे सकते हैं. और ऑफ कोर्स वी विल कंसीडर दैट एंड वी कैन रिव्यू आवर ऑर्डर whether that order needs to be retained जिस तरह से वो है, या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट होगी. तो वी हैव द पावर टू रिव्यू एज वेल. ऑल्सो हम एक एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज करते हैं. इन केस इंक्वायरी कमेटी ने कोई डिसीजन दे दिया है, कोई फाइंडिंग दे दी है, उस फाइंडिंग के ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दे दिया है, तो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन आप हमें फॉरवर्ड करेंगे इफ यू आर डिससैटिस्फाइड विद इट, और हम एज एपिलेट अथॉरिटी आपकी अपील दर्ज करेंगे. Considering that we have discussed the filing of complaints, it is important to understand that FOSPA also has a jurisdiction of an appellate authority, और हम अपील्स भी एड्रेस करते हैं. और फिर अकॉर्डिंगली अगर तो हमें लगता है कि वो जो डिसीजन लिया गया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से वो ठीक नहीं है, तो हम रिमांड कर सकते हैं उस केस को. हम अकॉर्डिंगली अपने एक्ट के तहत, अपने डिसीजन के तहत उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम उसको रिटेन रहने दे सकते हैं as depending on the circumstances and the merits of the case. अब ऑम्बुड्स पर्सन के पास जो डॉक्यूमेंट्स जब हमारे पास आ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स हम उन्हें स्क्रूटिनाइज करते हैं, हम उन्हें पेरूज करते हैं. अक्सर कंप्लेनेंट्स को या एपेलांट को बताने के बावजूद, गाइडेंस के बावजूद कुछ उनके कंटेंट में कमी रह जाती है, तो वी ऑफ कोर्स आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग हम उनको एड्रेस करते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि दीज आर द स्पेसेस वेयर योर कंटेंट इज लैकिंग which does not define your case, और आगे जाके आपको मसला हो सकता है, तो हम उस पर गाइडेंस देते हैं स्क्रूटिनाइज करने के बाद. ऑफ कोर्स हमारे पास भी कोई केस आएगा तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं पार्टीज की. हम कंपेल कर सकते हैं, अगर आपका किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो वहां से हम डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं. ऑल्सो कंसिडरिंग कि हमने 90 डेज में ऑर्डर डिसाइड करना होता है, तो हम एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल केस डिसाइड करते हैं. रेपिटेटिव एडजर्नमेंट्स हम नहीं देते हैं पार्टीज को. रेपिटेटिव एडजर्नमेंट्स के अगर कोई सॉलिड ग्राउंड ना हो, हम कॉस्ट इम्पोज करते हैं, एंड ऑल्सो वी मूव फॉरवर्ड विद द केस. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि एक पॉइंट है जो डिस्कस नहीं हुआ था, कि अगर इंक्वायरी कमेटी के पास एक्यूज नहीं आता बुलाने के बावजूद, तो फिर हम क्या करेंगे और हम किस तरह से मूव फॉरवर्ड करेंगे कंप्लेंट के पास. तो वेदर इट इज द फॉरम, दिस फॉरम और द इंक्वायरी कमेटी, अगर कोई एक्यूज्ड डिस्पाइट नोइंग दैट अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम, वो अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना जवाब ना जमा करवाए, तो आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, जिसको उर्दू में यकतरफा कार्रवाई कहते हैं. फिर जो आपके पास कंप्लेंट के कंटेंट्स होते हैं या जो फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, हम उसी को देख के जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं. एंड ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स can be initiated at any stage of the case if you're not appearing before this forum or before the inquiry committee. The next slide, we are moving forward to the end of the slides. हम अभी discuss कर लेते हैं the heart of the act, the minor and the major penalties as described and displayed on the slide number 27. डेटरेंस नहीं होती है किसी को भी किसी भी कानून के तहत, अगर उसको पता हो कि उसको उस कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी. तो क्या वो माइनर पेनल्टीज और क्या मेजर पेनल्टीज और किन सिनारियोज में वो होती हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं. माइनर पेनल्टीज में आ जाता है सेंशर. सेंशर इज मोर और लेस लाइक अ वार्निंग, बट अ स्ट्रिक्ट वार्निंग कि इफ दिस एक्ट इज कमिटेड अगेन, आपके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा. अगर कोई माइनर कंप्लेंट है उसके खिलाफ हम सेंशर ले सकते हैं. फिर अगर आपका कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन होने वाला है, तो माइनर पेनल्टी के तौर पे वो भी रोका जा सकता है. ऑल्सो आपको ये कहा जा सकता है कि आप कंपनसेशन प्रोवाइड करें कंप्लेनेंट को. मेजर पेनल्टीज एज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के मेजर क्या है. मेजर पेनल्टीज विद इन्वॉल्व कि अगर आप सीनियर पोजीशन में हैं, तो फिर आपको डिमोट करके एक लोअर ग्रेड पे, एक लोअर पोजीशन पे ले आया जाए. इफ यू आर एट BPS 16, आपको BPS 15 पे कर दिया जाए, एज द केस में भी. आपको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए, आपको आपकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया जाए. इफ यू आर अ लाइसेंस प्रोफेशनल,
जिस तरह हम वकला के पास, डॉक्टर्स के पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होते हैं, तो आपका वो लाइसेंस तक सस्पेंड किया जा सकता है अंडर द मेजर पेनल्टी. फिर ऑल्सो जो आपको फाइन इम्पोज होता है, दैट इज हेफ्टी इन नेचर, दैट इज मेजर इन नेचर. 5 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, एज द केस में भी फाइन इम्पोज होगा, और उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो कंप्लेनेंट के पास जाता है, एंड द रेस्ट इज ऑफ कोर्स ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर एज द केस में भी. जो हमारी 29th स्लाइड है उसमें हम टाइम लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं. टाइम लिमिटेशन क्या है? अब इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या कंप्लेंट फाइल करने की कोई लिमिटेशन है, तो उसका जवाब सिंपल वर्ड्स में है नहीं. द सूनर द बेटर इज समथिंग दैट इज प्रीच्ड, कि जिस तरह आपके साथ हादसा हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसी वक्त अगर आप अपनी कंप्लेंट ले आए तो इट इज ग्रेट. अगर आप तब नहीं ला सकते हैं तो एज अ फॉर्मर एम्प्लॉय भी आप अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं. हाउएवर अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं तो अपील के लिए मैंडेटरी देयर इज अ टाइम पीरियड कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एक अपील फाइल करनी है. अगर आप 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं कंसीडर करते हैं आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो फिर आपने एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की दरख्वास्त देनी होती है, जिसमें आप डिस्क्राइब कर सकें कि वाई यू फाइल दिस अपील एट सच अ बिलेटेड स्टेज, और क्यों आप 30 डेज को comply nahi kar sake. So yes, the last slide is of course our addresses. We have 6 offices. The head office is in Islamabad. We have 5 other offices, जिसमें से 4 regional offices है और एक sub office है. पंजाब में जो office है हमारा, that is in Lahore. सिंध का office जो है, the last slide, जो सिंध का office है that is in Karachi. And again, पेशावर, कोयटा में भी ऑफिसेज है, और पंजाब की ही जुरिस्डिक्शन में जो सब ऑफिस आता है दैट इज इन मुल्तान. सो दैट इज इट. जो स्लाइड नंबर 31 थी उसमें हमारा एक QR कोड भी है. सो देर आर 2 वेज कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो भी आप कंप्लेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से QR कोड स्कैन करके भी अपने पास अपना एक कंप्लेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं. There is a helpline number 0344467367, जिस पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, और फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपने किस तरह से ऑनलाइन या मैनुअली अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है. That's it from my side. I will give my mic to our regional head, Ma'am Lubna, so that she can answer any questions that you guys have. Thank you so much. Right. Yes, I'm regional head over here, Lubna Ali. So any question that you have, you can ask those freely. Everyone, you can type your question in the chat box, and our panelists will read them out loud one by one. And before we begin, let me tell you all that there are no small questions here. Workplace harassment thrives in silences, and in the questions we were too afraid to ask. So I invite you all to write whatever question you have. Your panelists are there to address them. There's a question. If the fate of the case has been decided by ombudsperson, can it be challenged in any court of law? Yes, we have a question right now. It says you have asked that if a case is decided by this forum, so can I read it? So, just a little bit over here. If the fate of the case has been decided by ombudsperson, can it be challenged? No, it cannot be challenged in any court of law. Rather, since we deal with the federal organizations, so any complaint that comes to us, a representation would lie against the decision of this forum. So not in any court of law, only a representation before the President of Pakistan. The next one. Any specific regulations regarding the working hours, especially for women in Pakistan? The अक्सर firms require करती हैं that you work late and deny कि आप after working hours हो. Yes, this more or less, relates to the work, to the, labor laws.
Working hours are 9 to 5. There is no distinction that being a lady, you are, privileged and you won't be attending the office for the full time. So you have to, proceed as a male employee. Once a complaint is received, what is the response time from the ombudsperson? So we respond immediately once the complaint is received. We lost you, Ms. Noor. If anyone can. Ms. Noor, are you with us? There was a connection error. We have joined again. Ma'am, if you could move forward again with the question answer. Noor, we lost you in the previous answer. If you can repeat that question and answer again. So because there was distortion. The working hours question. So on the working hours? Yes, ma'am. Or working hours will beta diya, or the Once basic the time. complaint is received. When we receive the complaint online, we certainly respond quickly. And we respond to them. We hear preliminary arguments from them online. Or if they are able to come over to the office, then they are heard over here. We do respond to them outright. Use of languages for the trainees or for the employee, just a hostile work environment or offensive work culture established with the head, that is considered as harassment to those trainees and students by the seniors. We basically, our law deals with cases pertaining to sexual harassment and gender-based discrimination. So if this is consequent, such a conduct is consequent to these harassments, then certainly we do take up those cases. Different pay scale for same position offered to million people also counts in harassment. Yes, it does. It in fact falls under the gender-based discrimination. If the pay scales are different and you are delivering the same work, then it falls under the gender-based discrimination under harassment. Yelling or rude behavior by senior employees or managers towards their juniors, justifying that we are saying this for your own good. Does this constitute as harassment? Yes, it gets connected to harassment if there is any element of gender-based discrimination or sexual harassment associated with it. Otherwise, it becomes more a departmental issue, administrative issue. If there is any further questions after the question that was pointed out after the CA firms, please let us know. I would request, since there are no further questions, I would request you to define what is actually unwelcome and how to identify कि किसके लिए क्या unwelcome है, whether only inappropriate actions are considered as unwelcome या फिर appropriate actions under the working space as well. As Noor has already given a detailed, her input on what harassment is. So unwelcome harassment is when a person, asks you for such favors which you consider are inappropriate, and the other person does not welcome those advances that you are making. So that becomes an unwelcome advance, or any message that is unwelcomed by the other party, by the complainant. That becomes a harassment, for instance.
if you send a message, if a simple or an ordinary message is sent to a person, to the opposite gender, and that message is not being welcomed by that gender, so it is certainly an unwelcome harassment on your part. So there is a question कि क्या important है कि इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका नेम डिस्प्लेड हो, या फिर सिर्फ आप किसी फीमेल एम्प्लॉयर को या अपने किसी सीनियर सीएफओ सीईओ को कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं? इसमें जो इंक्वायरी कमेटी है इसमें नाम होना जरूरी है. प्रॉपर नोटिफिकेशन इज इशूड इन दिस रिगार्ड. उसमें आप नाम करते हैं कि सच पर्सन इज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द इंक्वायरी. Up simply you cannot say only one female or two males will be members of the inquiry committee. Each time you have to issue a notification in this regard. And certainly you have to display their names on the code of conduct that is displayed in the organization. Okay, there is another question that audience wants to know, that if there is any question in the future regarding a situation we may be going through and want to understand whether we should file a complaint or not, is there any way for us to seek guidance on that? We entertain complaints when some harassment has occurred. It's not that you are apprehending or you are foreseeing that something would happen, and we would proceed for restraining that person, that such matters cannot be adjudicated upon for this forum. It's simply if you face a harassment, then you come up with a complaint before this forum, or even before the inquiry committee under the Harassment Act of 2010. Otherwise, obviously, if such there are apprehensions of that nature, that employee can report to her senior officer in the organization so that he caters with that situation. All right, and there is another question that what measures are in place if that after the complaint has been discharged and that rude or disrespectful behavior continues in the company? So if the accused is the same person and a new cause of action accrues, then she will come up with a fresh complaint if there are added circumstances to it. If otherwise she can also come up with a plain application. Then we would look into the what she has mentioned in it, call for answer from the other party, and then proceed on it. Okay, so we have repeated questions from a lot of females and in fact male as well, and they want to know that their manager treatment is very rude, and they are justifying their rudeness by saying that we are saying this for your own good. So is this compulsory that there has to be only a rude behavior can come under harassment definition, or there has to be some sexual harassment element in it? If I've addressed this question earlier. So if there is any rude behavior of the officer, then that becomes more of an administrative matter. So such behavior can be reported to the administration of the organization. We take up complaints if this such a behavior is added to the sexual harassment or gender-based discrimination. All complaints where harassment is alleged, we do not entertain those. Okay, so it has to be connected or associated with some sort of harassment under the law. How do you know that you have been harassed? So very simple, a simple question and a simple answer to it. So harassed, when we see any unwelcome sexual advance made by the other person, any request demanding for sexual favors,
cyber stalking, the simple stalking if somebody is following you and you are not welcoming that conduct of the other person, then obviously that would be termed as harassment. So if it is consensual, you have no objection to his acts, then that would not be a harassment. Okay, there is an interesting question that some firms don't send their women to audit clients because of the reason that the firm does not think that the client environment would be safe for women. So that results in learning gap. So like that is an interesting question. I think that is something good for them. I don't know. What would you like to answer for that? But I am of the view that they should be sending their females out for auditing purposes, because if they, wherever they go with an office related work, then that place becomes their workplace. So if any harassment is caused to them at that place, then they can come up with a complaint. So we should take the risk and send them. It might be possible कि उनके जाने से उनका environment ही अच्छा हो जाए. Possibilities both way. I remember like many a times I was sent to the clients जहाँ पे उन्होंने बोला भी कि आप अपनी ट्रेनिंग को वापस ले जाएं, but my manager said no, we hire women and we will definitely deploy that in your workplace, and things were really better after that. So there is a question that what measures are in place to ensure that the complaint is not subjected to rude, disrespectful, or retaliatory behavior by the company after filing a complaint? We have a provision of retaliation under the law. Under that, parties simply moves an application. So we call for answer from the opposite side and pass an order directing, the organization not to take any retaliatory steps against that person, against the complainant. Okay. So there is another question that is there any penalty for frivolous complaints? मतलब complaint चली गई लेकिन पता चला कि it was false. I know. Yes, this is a very frequently asked question. So the law says, our law says that when the matter is decided, taken up by the inquiry committee, then it is the discretion of the committee to forward that matter once it comes to the conclusion that the complaint was false or frivolous. So when it comes to us, so far no such case has been reported to us. So if we can impose a penalty upon that, upon the complainant, as regards the law with pertaining to the delivery of this office, there is no specific, it is not specifically prescribed what could be done in case of false complaints. But the remedy lies before civil courts. In those, in the cases where we feel that the case complaint was false or frivolous, which we do not, normally relate to, for the reason that it is very difficult to gather evidence. The complainant has, certain problems in putting forth her evidence. So even if the case complainant is right on her way and she cannot establish that, so it doesn't mean that the complaint was false. So generally, if a complaint is dismissed by this forum, then the party has the remedy to file a suit for damages. Okay, so they can file a suit for damages, right? Moin Khan, if you have any question, please ask us. The question is not displayed on the screen. Yeah. Okay. So there is another question. If someone wants to report a complaint anonymously or an indirect report. Of consent, person to do, for example. We can't hear you. There is some distortion.
No, is it really? Okay. So, under the laws, you all must be knowing there are federal ombudspersons. So we also, go by the FOIRA Act, that is Federal Ombudsperson Institutional Reforms Act of 2013. It provides that anonymous or pseudonymous complaints cannot be entertained. So a complainant has to be named, or a person cannot file a complaint in the name of some other person. So pseudonymous complaints and anonymous complaints cannot be entertained. Okay. So there is another question. What if administration is not cooperating with you and justifying manager's behavior? You have the option to approach FOSPA. FOSPA, definitely. We are a parallel inquiry committee. Yeah, So if you are not satisfied with the proceedings that are being conducted in your organization, you have to withdraw that complaint and then approach us. Or even if you approach us beforehand, then you have to withdraw the other complaint. Only one will be proceeded with. बिल्कुल ठीक है. Okay. Ma'am, I have a question here. जी तालिया. You if have right someone- to only you have the right to ask the question online. Okay. Ma'am, if someone witnesses harassment but the victim does not want to report it, what should we do if we are seeing them like constantly being suffered from it and they don't want to step out? Obviously, because obviously एक fear factor होता है कि if we report, because अगर एक senior person जी मैम. I would advise in such circumstances that the matter should be reported to. So I'm saying that I would advise that in such circumstances, the matter should be reported to the senior, to the head of your organization, or whoever is, a senior in post over there. But any other person, any second person cannot report the matter, they cannot bring up a complaint of harassment on behalf of the other person. So complainant has to be the person who has been victimized. Okay. And there is another question that how to predict a sick mind wearing the fake persona of kindness and respect. Interesting question. Honestly, I would say you should be strong in yourself. Don't let such people come close to you. Okay, there is another question. Is this included in harassment that firms don't hire female employees by saying that they have many issues? Yes, certainly. It falls under gender-based discrimination, falling under harassment. So already as you have been told that harassment has two limbs. One is sexual harassment, the other one is gender-based discrimination. So this matter would fall under the gender-based discrimination. Okay, so there is another question. How does the concept of consent account for personal preference? For example, if someone welcomes a late night message from person A, but finds the exact same message from person B to be harassment, how do we address the defense that person A did it too without being reported? एक कोई लेट नाइट मैसेज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट नाइट मैसेज एक मैनेजर ने दो लोगों को किया. अच्छा, इसमें I've got this question. So person A the other person is showing no resistance to that message. So if the same message of the same kind, how does the concept of if someone welcomes a late night message from person A but finds from person B to have been harassment. So okay, so manager wali aap baat kare, if a manager sends the same message to two different persons, fine? This was how you were explaining.
So Yes. it is welcomed by one person and not by the other. So one claims it to be harassment, the other does not. So Yes. a harassment, it differs from person to person. You do not have any strict, criterion of determining whether the opposite person would consider that message as a harassment, because for the very reason, for some people, for some it might not be. So for those who consider it is not a normal conversation, that would certainly be amount to harassment, provided such a pattern is consistent and it is being, the other parties resisting on those messages, and even if those are being continued, then it would be a harassment. बिल्कुल ठीक है. So there is another very important question by Rashid Saha. Does the Act recommends any code of conduct for affixation in offices? The law requires that of every organization to display a code of conduct in their organization. That is mandatory. The law says that. So if it is not displayed, inquiry committee is not constituted, competent authority is not designated. So any employee can approach a district. In that eventuality, a fine can be imposed extending from rupees 25,000 to rupees 1 lakh upon the employer. These are mandatory requirements that have to be followed. Any other penalty if they don't do that? Yes, the penalty is imposed by the district courts, not by our forum, not by FOSPAs. Okay. So there is a question from Mahin Fatma. What specific mechanisms does FOSPA recommend to protect a complaint or witness from professional backlash, like sudden negative performance reviews or transfers while a matter is being looked into? What legal liabilities does an organization face if it fails to prevent retaliation against an employee? So that is actually the particular question. So is there any penalty on the organization if after that incident has happened and they are still not able to prevent retaliation against that employee? So this relates to pending case or a decided case? The question. I think in either the case, because वो चाहे वो in process में है या conclude हो गया, वो retaliation तो start हो जाएगी. जी, okay. जी, let's say अगर the case is pending before us, तो फिर हमारा ही law, मतलब I will be talking, relating everything to the law we are working upon. So उस law में है कि retaliation के बारे में लिखा है कि if anybody retaliates against you, you have to report the matter to, if it is an inquiry committee of your organization, the matter can be reported to the committee as well. And if it is a complaint pending before this forum, then applications are certainly filed. So what we do, we pass an order restraining, let's say if the organization is taking any adverse step against the complainant for the reason that she has, impleaded the high management or any, such person. So what we do, and is transferring her or, writing adverse remarks against her. So we restrain the organization or whoever the concerned is. We is restrained from doing so. And what is after the complaint has been settled? So there another complaint has to be raised or what? To some extent, we get connected to those applications as well, but it depends, what, how, if our order is not being complied with. So we do take up those applications and proceed on them. But let's say if there is a difference in scenario or different, sort of harassment has been done, then certainly a new complaint would be filed. Okay, so Anam says that thank you, उसे बहुत awareness हुई है, but she really wants to know that what should I do when harassment comes in
in the form of verbal comments and taunts that are difficult to prove, and how can we gather evidence in such situation? That's a very good question, because complainants often do not are unable to find the evidence in such cases. So let's say if it is in some office and it is verbal harassment, so CCTV footage is there, so that can be resorted to. So any your colleague, you can confide in him. You can as soon as you leave that place, you can tell him that him or her that such and such harassment has been caused to her. Then you should document this thing, write an application to the senior saying that you have been harassed by such and such person, so that there is a proof when you bring that complaint for adjudication either before the inquiry committee or before FORSPA, then these such documents would become a part of your evidence. Okay. So if there are WhatsApp, let's say if there are WhatsApp messages or any inappropriate video has been shared with you, just capture those. Those would also become part of your evidence. अगर एक दफ़ा हुआ है तो इसका मतलब है दोबारा होगा, and you may have that recording available, so you can gather that evidences. Okay, so there is a very important question from Farooq Naveed Tarar. Are unwanted advances from audit clients considered under this act, as there is no employer-employee relationship in case of trainee and audit firm? मतलब because हमारे clients हैं, client से किसी ने कुछ unwanted इस तरह का behavior रखा है, तो उस केस में तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा, और उसको हम उसमें certainly होगा, क्योंकि जो आपके clients हैं, those would be considered as your employees. Employer, yeah. आप employer और वो employee, अगर employee भी ऐसा act करता है against the employer, तो वो भी that is also accountable. बिल्कुल ठीक है. Okay, so Halima wants to know, increasing your workload on base of personal grudges and giving you short deadlines and insult you in front of everyone is harassment or not? It is a sort of harassment, but more to be looked into by the organization. But so not we say that if there is such a conduct on the other part, it has to be somewhere associated with harassment with which we are dealing. That is it could be a sexual harassment or a gender-based discrimination. And sexual harassment, as it's not limited to only a physical touch. It can be verbal. It can be any demeaning attitude, sexually demeaning attitudes, anything related to such a conduct. So demeaning attitudes or such a behavior that you connote reveals some sort of a negative inference on the basis of your gender. So these all fall under sexual harassment. So if such a conduct is followed by some person coupled with the harassment that I've just mentioned, then it becomes a case of harassment to be triable under the law. Okay. So there is another question. Uma wants to know, और उसमें particularly HR के role के बारे में बात कर रहे हैं, because work from home अब बहुत ज़्यादा है, and they want to know कि वहाँ पे किस तरह से हम cut off लगाएं personal life और workplace harassment की. For example, if co-worker are in a private WhatsApp group chat or interacting on personal social media outside of work hours, at what point does off-clock behavior officially become a company HR issue? If that person is in a work relationship with you, then there is no time limit to it. So if he is harassing you in late hours, it would be because you are having a relationship of a work-related relationship you have with that person. So if he is harassing you off hours, then that would also be considered a workplace harassment.
because that association is linked to your workplace. It is not consensual, obviously. So if that person comes up such conduct, then that is harassment. Because work-life relationship is, employer-employee relationship is there. And, Relationship. बिल्कुल ठीक है. Okay, there is a small question. I don't know. Giving you the work-life mark, attendance, and whatever, and specifying this is girl's job. How can a male employee do this? Is harassment? Harassment, what I gather from your question is that harassment for a male. Yeah, I think वो कहते हैं कि ये लड़की कर सकेगी तुम लड़के नहीं कर सकेंगे. हाँ, ये इसमें हम कहेंगे नहीं, अगर तो ये गर्ल कंप्लेनेंट इज अ फीमेल, उस पर्सपेक्टिव से है तो ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आता है, फॉलिंग अंडर हरासमेंट अंडर द लॉ एक्ट ऑफ 2010, proceedable under the law as a complaint before this forum or before your inquiry committee. ये harassment ही होगा. It is a gender-based discrimination, so proceedable. Okay. So most females are not aware of FOSPA. I believe awareness session should be conducted in companies so that women can better understand FOSPA and their rights. ये तो आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ये करते हैं? जी, हम अप्रोच करते हैं टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें अप्रोच करते हैं, सो वी डू डिलीवर whoever asks us for. Okay. Perfect. So there is a question: if a woman was previously in a relationship and later separated due to family disagreements or personal reasons, and she is concerned about her private data, photos, chats, or personal information being misused, what legal or practical options are available for her to recover or protect her data while keeping her identity confidential? It would certainly not be a complaint of harassment before us, because इसमें कोई workplace element नहीं है, और डेटा के ऐसे है तो ये this is a matter of the cyber wing. FIA में आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे आप NCCI में, तो वहाँ पे एप्लीकेशन आपकी जाएगी. Okay, so there is a question. Is suggestion from me is said in our firm we have a staff folder in which all the policy of the firm are available, including workplace harassment policy, and format of complaint form is available. It makes very easy for staff to lodge a complaint. However, after attending this suggestion, I will improve the same from this forum. You may suggest that entities should follow this practice. So, is it you are asking me to give some suggestion on it? But this is what he is doing. So, आपकी क्या suggestion है to improve this, and others can also follow this practice? That is very great. The thing, yeah, what you are doing is commendable. So it's the point है कि every person, every employee should know what his or her rights are in the organization. So handy information is, very welcoming. Obviously, the other party can easily file a complaint if such a practice is followed by all the organizations. Yeah, and this is the best that you can do for the best awareness practice of your own. Yes. Exactly. Okay, once a complaint is received through the provided email ID or phone number, what will be the response time? We respond immediately, and if we think that complaint is proceedable under the Harassment Act, that then we communicate with the complainant, give a preliminary hearing to that person,
So if we come out with the opinion that yes, that it is a harassment under the law, then we ask that person for filing a detailed complaint. So all this procedure is, followed and monitored, and we respond to it immediately. बिल्कुल ठीक है. I think this is the same question that is repeated. I'm just you have the option to pass it on, but I'm just reading out for the sake. There are practices in several firms of imposing fines and late sittings due to personal grudges. The same firms do not have any policy in place for recording of overtime. How is this factored into when evaluating a complaint? लेट सिटिंग है, ग्रजेस की वजह से आपसे काम करवा रहे हैं, तो इसको इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये. अगर आप समझते हैं कि इट इज अ हरासमेंट being caused to you, so इसमें फिर हम what we require is if it is a gender-based discrimination जो आप कर रही हैं, provided I would say कि such a work is not being taken from the males. So if such outfit is being expected from a female, then it should also be equally being done with a male employee. So if it is not being done with him, then it would be a case of gender-based discrimination falling under the Harassment Act. And I believe this could also be, I don't know, maybe misused or something. It's very difficult to actually do that. Okay. Yeah. Further, I would add to it that I was already told you that we have 5 ombudspersons. We deal with harassment complaints only. Then there is an ombudsperson of maladministration. Okay. So any matter linked to maladministration within the organizations relating to the government, those can be reported to that. Okay. So there is another interesting question. Sometimes retaliation isn't a demotion or firing, it's just being excluded from lunches, meetings, or casual group chats. Does this social exclusion constitute the definition of retaliation discussed after complaint is made? Social exclusion. It becomes a retaliation if only you are excluded from that. The social mixing. If you are excluded in that on the ground that you have filed a complaint, then it becomes a retaliation. Okay, so there is another question that if you ask your female manager to give you leave because of your period pain, and then she said, I will discuss this with male assistant, which is very unnecessary, and then saying he has allowed you can go, but embarrasses you in front of him and pointing out your periods again and again, is harassment, and how we can complain about this. It's very tricky question, sir. I would that person can certainly, obviously she would not be reporting to the next higher officer, so that all things or such things would be discussed openly. It can be a form of gender-based discrimination, so but depends, relating to all the entire facts. So you need to make a hard judgment on this, then. FOSPA, if that complaint comes to you. Okay. Well, let's see if such a case comes up before us, so how to deal with it. So Mohammed Takir wants to know, what are the best ways to handle and report harassment that happens through random WhatsApp message or other online platforms, regardless of the victim's gender? In such cases, can incidents also be formally reported to FOSPA for guidance or support?
I would say that if such messages are being sent by a co-employee or anybody, your employer and anybody, then those can be reported to us. Otherwise, there's a cyber wing which deals with such cases where there is no work relationship between the parties. If it is an anonymous message or whatever message that is disturbing you, you can approach that forum. बिल्कुल ठीक है. So there is another, I think, very important question. In several instances, there have been many grievances that have been shared openly on professional platforms like LinkedIn or workplace harassment. Does FOSPA have the authority to take action on its own basis, on the basis of those grievances, or does a formal complaint has to be filed? So far, there is no legal provision for taking, any suo motu action. We cannot take up any complaint on our own. Only once a complaint is filed, then we proceed on it. We don't have formal channel. Any such from a formal channel, either before the inquiry committee of the organization or before us. Such matters cannot be taken up by the ombudsperson. Okay. A very small and interesting question. If someone is not returning your money, is it also harassment? आपके पैसे लिए और आपके पैसे वापस नहीं दिए जा रहे. But again, I think that gender-based discrimination has to be there. There was a distortion. Can you repeat your question? If somebody has taken your money and he or she is not returning, so is this harassment or not? Still the same. Same question, same answer. बिल्कुल ठीक है. I think we lost the connection. I think we have. Confirm if you could hear us properly. Okay, so we have answered all the questions. I think this is the best thing that we have been doing right now. And thank you so much, Ms. Noor. Thank you so much for everyone to be here answering our questions and some innocent questions as well, definitely, because we want to get aware. And thank you, Noor, and thank you for your presence. And I would like to thank all ICAP staff for coordinating it, especially Nazia, my entire women committee members, particularly Taha, and our very warm wishes for you for this very important task आप लोग जो कर रहे हैं. So in future we would definitely like to collaborate and evolve as the things are evolving, and we will remain in touch, inshallah. Thank you so much. Thank you, likewise. Natalia, you can conclude. Talia, we can't hear you. You are off. Am I audible? Yeah. I want to thank you to Ms. Fozia Bakar, Ms. Samara, Ms. Noor Fatma, and Ms. Lubna Ali, and to everyone who has joined us today. Thank you all for being here. And I wish everyone would take up something from this session and carry it forward. We hope to see you all at the future ICAP events. Until then, look out for yourself, look out for each other, and remember, building safe spaces is everyone's responsibility. So thank you, everyone. So that's all for today. Allah Hafiz. Thank you, Allah. Allah Hafiz.